everyone, welcome to Bratati science class. Here Miss Bratati is back with class 10 chapter number 3 metals and non-metals. So we are using ring, we are wearing the chains, right? We are wearing ornaments, bangles. So many ornaments are all type of metals. We are using the steel glass to drink water or plate to eat food. We even eat in a brass plate and we feel that is golden color, which gives us the luxurious feeling. So those are all metals. So in today's class we are going to discuss what are the metals and non-metals, how to distinguish between their properties. We also check how do they react with oxygen, water, etc. We'll discuss about the reactivity series, and finally, we are going to solve few exercise questions. So let's start. I will be sharing my slide with you. I hope it's clear. Okay. So let's begin with the difference between the metals and non-metals. The metals are those like sodium, potassium that can be actually, we can manipulate them to the thin sheets that they can change their shape, but not the non-metals. The metals are even ductile in nature. That means we can strike them to make thin wires. You know one thing that copper, ferrous, aluminium, lead, these can be drawn into thin sheets or even the wires. The gold, that is that we are wearing the ornaments and all, 1 gram of gold, from there we can make 2 kilometer thin wire. Isn't that interesting? But for non-metals like carbon, sulfur, oxygen, nitrogen, we cannot do that. The metals are good conductors of heat. Now for that, you need a stand. Take any metal rod and put some wax in the other free hand. Now when you're heating the metal rod, you can see the wax is being melted, not the metal. That means metals are the good conductors of electricity or heat. Sorry, a good conductor of heat. If you take them like they are very hard when you're touching their texture, physical appearance is very hard. But there are some exceptions. If you take sodium, you can cut them with a knife, but not with the other metals. Like copper, ferrous, aluminium and magnesium, you cannot cut them with a knife, which is not the case of the non-metals, which are generally very soft in nature. Now, as the metals are very hard, they have the high melting point as well as boiling point, not like the non-metals. The metals are also shiny in nature. If you clean the surface of iron, copper, aluminium and magnesium with the sandpaper, you can see the surface is shining. We call them lustrous, unlike the non-metals which are non-lustrous. The metals generally are solid in nature, as potassium, sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. But mostly the non-metals are liquid or gas. Liquid non-metal is bromine. Gaseous non-metal can be nitrogen, oxygen and so. If you take a hammer and strike the metals, it will give you a ring sound. We call them sonorous, but the non-metals are non-sonorous. As I told, every example have few exceptions. Like non-metals generally do not conduct electricity, but graphite can do that. To check how the metals conduct the electricity, you need a closed circuit, a battery, switch, wire, metal, bulb. If you close the switch, a circuit is completed and the bulb will glow once you turn on the switch. That means through the metal wires, the electricity is passing. Clear? The non-metals are generally not shining, non-lustrous. But there are exceptions like the salt we eat, that is sodium chloride. What is that? What is the non-metal or the mineral present in sodium chloride? It is the iodine salt, we call it.
So iodine is very shining, or the crystals of salt are lustrous in nature, same as the graphite. We see the graphite slab on our kitchen. It can be black in color, some other color, but they are very shiny in nature. The metals are generally or solid, as I told you, but there is mercury that is present in the thermometer, and that is a liquid metal. We all know that it's very much reactive, even with a small temperature that will make it rise. And we can say the perfect body temperature. Okay, so metals are hard, as I told you, but the exceptions are sodium, potassium, and lithium that can be cut with a knife, but not calcium, aluminium, magnesium, etc. Non-metals are generally soft in nature, but do you know diamond, which is very precious, that is again a non-metal and they are very hard. Now moving to the properties, how to check the properties of the metals. We already discussed about how to check that the metals are very hard. You can touch them, the physical structure, and also you can put them into thin shapes. So we call them are malleable. Lustrous, shiny we discussed. Ductile we discussed. Now here I want to mention you silver and copper. These two are silver and copper are best conductors that can conduct the electricity. But at the same time, the lead and mercury, those are the poor conductors. They cannot pass the electricity very well to switch on the bulb. Now, electric circuit, closed circuit, as I told you that if you take the metal wires, generally the bulb will glow. And at our home, we have the wires, and all the wires are covered with PVC, which stands for polyvinyl chloride. This is for the protection of the wire to get a shock. PVC, polyvinyl chloride, acts as insulator to prevent the shock. Insulator, we know that do not conduct the electricity. Now, sonorous also we discussed. Let us move to the non-metals. As I told, mostly they are the solid or gas, but exception is there, which is bromine, a liquid. Now, solid example can be carbon, sulfur, and so on. And gas can be nitrogen, oxygen, so on. So what did we see? We have seen basically there are lot of exception among the metals and non-metals. So physical properties we have discussed. Now let's move to the chemical properties. We will see how do they react with oxygen. So when metal reacts with oxygen, they produce metal oxide, which in turn reacts with the water to give basic salts. We know the base turns the red litmus to blue. Similarly, the non-metals, when they react with the oxygen, they give the non-metallic oxide, which when reacts with the water, they give the acidic salt. And the acid turns the blue litmus red. Then what are metals? We were talking about metals are hard and the physical properties. What are them? They are electropositive elements which will lose electron and they will form the positive ions. The positive ions we call them cations. So sodium is a metal whose electronic configuration is 281. So as you know, in the outermost shell there is one electron. They will try to lose. So they will lose one electron and they will form Na plus. So this is a positive ion. That is why we can call them sodium is a metal. Now, reaction of metal with the oxygen, as I told you, sodium, potassium can react vigorously to form the metal oxide, which in result subsequently will react with the hydrogen or the water to form the metallic oxide, hydroxide. Now, sodium, potassium reacts even in the room temperature, like potassium reacts with oxygen to form K2O. These are actually written as down. The 2 will come in the subscript. This 2 will come in the subscript, but when I was typing, there was no such options. Same for Na plus O2 will be Na2O. 2Na plus O2.
So this reaction you can sometimes practice at home. 2Na plus O2, it will be Na2O. So sodium oxide. So metal reacts with the oxygen to form AMO or metallic oxide. They are very reactive. Okay. So we need to protect them in order to, they don't reactive well with the vigorously in the air. We need to keep these metals like sodium, potassium under the kerosene oil to prevent them becoming highly corrosive in nature. Now, magnesium and zinc, they cannot react at the room temperature. They need separate heat to react with the oxygen. So, this G will not come. Mg plus O2, it is magnesium oxide, but here they need the separate heat from outside. And ferrous and copper, these are more down in the reactive series. We know in the bottom line, they are not very reactive. They are less reactive in nature. They need prolonged heating, more and more heat. So for a long time, we have to heat the iron with the oxygen. They will form Fe3O4. So how many of you know rusting? We say that iron reacts with the air and water, and subsequently a brown color coating or rust forms along with the iron surface. That is very true. But for a long time, it's not that today you are making a gate, a school gate, is next day it is getting rust. It takes a long time, maybe few years or many years to get the rusting, and then we need to change it. And nowadays we are protecting the layer with some other metal cover, like to protect it to get it from rusting. If we cover it with grease or paint or some other element, you know it's the iron is not directly in touch with the air and the water. Okay. Now we are moving to the nature of this metal oxide. We will know metal reacts with oxygen to form the metal oxide. So they are amphoteric in nature. Few metal oxides, few metals are amphoteric in nature. That shows both acidic property as well as the basic property. Such metals are like aluminium and zinc. Here we will see aluminium oxide, which is reacting with any acid like H2SO4 or HCl to give salt and water. So here aluminium chloride is nothing but salt and water. So what reacts with acid to give salt water? Yes, it is a base. So here aluminium oxide is acting like a base. Same time, if you take KOH, potassium hydroxide or sodium hydroxide, what we call as caustic potash or caustic soda, again we will get the salt and water. This time it is called sodium aluminate. This salt we call sodium aluminate. And here which metal or matter reacts with base to give salt water? It's the acid. So here the aluminium oxide is acting as an acid. Similarly, ZnO2, zinc oxide, also is an amphoteric oxide that also reacts with both, that is that is with the acid will give the zinc chloride ZnCl2 water, or with the NaOH or base that will give to the sodium zinc Na2ZnO2. Right? Now moving to what are alkalis. So students, those who are following my videos, you can see the playlist that is created for grade 7, all the chapters, grade 8, grade 9 and grade 10. So you can go through all the chapters. The main aim of this class is to make it short for you. So you have the details in the book. But this is like in a nutshell, in one short video, how can you cover the whole topic? What are the alkalis? We know MO, that is the metal oxide, are mostly insoluble in the water. But then some can be soluble, which can dissolve in water. We call them alkalis. Like you know, this sodium hydroxide, potassium hydroxide, right? Caustic soda, caustic potash. So K2O also reacts with the water. K2O reacts with the water to form 2KOH, potassium hydroxide. Now, I was talking you about sodium, potassium, which are at the top of reactivity series and very reactive in nature, so that they don't be corrosive, and to avoid the accidents, we need to put these metals under the kerosene. And magnesium, zinc, aluminium, they are covered in a thin layer of oxide.
again to prevent. We know they need the heating. They don't react at the room temperature, but they need heating. And gold, sona, they do not react with the air even at the high temperature. जितना भी आप दे दो वो मेल्ट नहीं होगा. So उसके लिए and they don't react also. इसीलिए gold ornaments we choose to wear which do not get black, do not get discolored, do not get faded, but we see rather day by day the brightness or the lustrous is increasing. How many of you have followed? Write in the comment box that gold is becoming lustrous day by day. That's why we prefer to use the gold items. Now, reactions of the metals with water, I was telling you that when we react the metal with the water, they either form metal oxide or further they are reacting with the water to form metal hydroxide along with the gas, that is the hydrogen gas. Now you remember I was telling you that in the top of the reactivity series, sodium, potassium, calcium, these kind of metals even react in the cold water because they are highly reactive. So they even reacts with the cold water and it is a highly exothermic reaction. As they evolve enough heat. So these are the highly exothermic reaction. And the heat they produce that even may catch fire. Okay, so highly exothermic reaction and even that catch fire. So to protect them, we put these kind of metals under the kerosene, right, to cover them up. Calcium, magnesium, they don't react that much. And so they need heat also, right? They produce the hydrogen, which subsequently produce the foaming, frothing, and those bubbles or frothing that attach the metals, which help them to float on the water. We can see calcium, magnesiums are floating on the water. That means the hydrogen gas bubbles or the frothing or foaming that is creating, making them to float. Okay. Now, aluminium, ferrous, zinc, they react with the steam. The water vaporized, like they need the more heat, as I said, for the prolonged time, and they need the steam to react with. Now, how do these metals react with the dilute acid? So, we were talking first metals react with oxygen, metallic oxide. Metallic oxide further reacts with water, metallic hydroxide, but not all metal oxide are soluble in the water. Those metal oxides are soluble in the water, we call them alkalis. Metallic hydroxide, example sodium hydroxide, potassium hydroxide. Then we reacted them metals with the water. When they are producing with the water, what are they producing? Hydrogen gas they are producing, or metal oxide or metal hydroxide they are producing. We have seen according to the reactivity series. Now we are moving to the dilute acids. Now in the top of the reactivity series, those very reactive metals actually displace the hydrogen to produce the salt and water. Now zinc, we can see zinc can displace the hydrogen. This hydrogen gas will be evolved and zinc sulfate, which is a salt, will be produced. So they can actually displace the hydrogen, but similarly, if we come down to the bottom line of the reactivity series, those metals cannot displace the hydrogen. Now coming to sodium, calcium, magnesiums, they are highly reactive. They react violently with the dilute acids. But iron, that is in the middle part, that is reacts very slowly, and copper not at all. We will see the reactivity series and then we will come to know about this. Now come to a different name of a chemical substance, that is aqua regia. Sometimes the 1 mark question comes, what do you mean by aqua regia? It is the freshly prepared mixture. For this you have special 1 marks extra. Freshly prepared. If you are keeping the aqua regia for long term, that is not going to be useful. So freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid. Each and every point is important. 1 part and concentrated nitric acid with the concentrated HCl, 3 parts of concentrated HCl. That mixture is highly corrosive. They even dissolve the gold and platinum. But if I take alone only the nitric acid or the HCl alone, they are not going to do the action. So we need the mixture, and in the particular ratio 1:3, both the acid should be concentrated in nature and then the freshly prepared. So these all 4 points to be keeping in mind. Coming to the reactivity series. Here one interesting fact, let me tell you. Sodium, this is potassium. So P for please.
Sodium, S. Please send calcium. These are the mnemonics, right? If you remember this sentence, you can remember the order of metals in the reactivity series. So this is how I remember. So it's up to you if you use this mnemonics or you can use any other mnemonics. Please send cat, monkey, and zebras ferrous iron in PB public, H for house, C for come, H for home, silver, super, gold, swift, P for please. Please send cat, monkey and zebras in public house, come home, super swift please. Or you can remember this one, kaku, nana, chaat, mange, आलू ज्यादा पीके भरे है and then chop. This all together making chop. So this is how we can remember the reactivity series, जिसमें you can easily remember the order, and you know the more reactive metals actually can displace the less reactive metals from the salts. Like zinc, copper chloride. Zinc किधर है? There is the zinc, and here is the copper. So zinc can replace the copper, right? So whatever materials, whatever metals are there in the top, they can actually displace the less reactive metals. Now you may ask, ma'am, why some metals are highly reactive and some are less? Those metals that can lose the electron vigorously even at the room temperature without any heat, and they form the cations, the positive ions, they are highly reactive. What are the non-metals? So metals are the electropositive elements. So non-metals are electronegative elements which form the negative ions. We call them anions. The anions by gaining electrons. So the non-metals will gain electron. The metals will lose electron. So non-metal electron के साथ करके negative ions और anion देगी, right? Now what about the reaction of non-metals with oxygen? ये non-metal carbon पता है, solid one that reacts with the oxygen to give carbon monoxide or carbon dioxide. अगर ये कार्बन मोनोक्साइड दे रहे हैं, that is neutral in nature, monoxide. लेकिन अगर डाइऑक्साइड दे रहे हैं, so that will be acidic in nature. Okay, next. Remember, star, non-metals do not react with the water and dilute acid. ठीक है? Non-metals react with the salt solution. कैसे? We already discussed. The more reactive non-metals will displace the less reactive non-metals. कैसे? सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन ये रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन में है, दोनों ही है, लेकिन क्लोरीन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमीन, सो ये उसको रिप्लेस करके हटा देंगे. सो ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड नाउ. चलो भागो, ये गया और सोडियम के साथ जुड़ गया. सो क्लोरीन विल रिएक्ट विद सोडियम एंड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड आउट. ठीक है, अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स का पूरा हमने तैयारी कर लिया है. क्या है मेटल्स, क्या है नॉन मेटल्स, डिफरेंस क्या है, रिएक्शन कैसे करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डन. हाउ डू आपस में एक मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर? So we know metals, they are the electropositive elements, so they lose the electron, but non-metals are electronegative elements, they gain the electron. To form the compounds we call them ionic compounds. ये जो compounds form करते हैं उसको हम बोलते हैं ionic compounds because they are sharing their bond together. ये bond share करने से क्या होता है? Bond share करने से they are sharing their electron and they are following the ionic bond. तो हम अभी आए हैं प्रॉपर्टीज में.
प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में आ गया है। बट ठीक है, ये कैसे रिएक्ट करता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ये कैसे रिएक्ट करता है, मैंने अभी अभी बोला है आपको कि वन विल गेन इलेक्ट्रॉन, वन विल लूज इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है? सो एक एग्जांपल ले लो सोडियम एंड क्लोराइड का। ठीक है, सो सोडियम, कैन यू सी हियर, सोडियम, सोडियम का कितना रहता है 11, प्लस क्लोरीन का कितना रहता है तो पता है 17। ये इसका ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनेगा ना, सोडियम इज 281 एंड क्लोरीन इज 288। ठीक है, सो ये वन लूज करेंगे, लूज वन, और ये एक गेन करेंगे, सॉरी, हाँ दिस इज लूजिंग वन। अगर गड़बड़ हो गए तो व्हाट टू डू इसमें, सॉरी, तो ये 7 होगा, 7, दिस इज 7, 287। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली लूजिंग वन एंड दिस इज गेनिंग वन। सो फाइनली ये Na प्लस बन गया और ये Cl माइनस बन गया, क्योंकि इसमें अभी 28 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 288। तो इसकी वजह से दिस आर एक्चुअली मेकिंग अ स्टेबल आयनिक कंपाउंड विच इज NaCl और सोडियम क्लोराइड। आया समझ में? ठीक है, सो अभी ये समझ में आया, तो आयनिक कंपाउंड जो बन गया NaCl, उसका नेचर क्या होता है? दैट इज फिजिकली वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। उसको हैमर लेके इफ यू वांट टू स्ट्राइक ऑन इट, इट इज गोइंग टू बी ब्रिटल, तोड़ फोड़ जाएगा। सो वेरी हार्ड इन नेचर। हार्ड है तो भाई हाई एमपीबीपी होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी कहां पे होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। सो सॉल्युबल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिसके पास चार्ज है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और पोलर सॉल्वेंट्स भी वही है, जैसे कि H प्लस H माइनस पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाएगा। बट इन इनसॉल्युबल, बट इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन होता है। बेंजीन का C6H12O6, और बेंजीन जो होता है, नॉट ग्लूकोज, आई एम नॉट सेइंग ग्लूकोज, सॉरी, बेंजीन का जो रिंग होता है ना, दैट दैट बेंजीन बॉल स्ट्रक्चर, it is non-polar. Non-polar है तो the ionic compounds or the electrovalent compounds will not be soluble. अभी conduction of electricity, the compounds show the electric conductance in the molten state में या soluble state में ही they are conducting the electricity. But solid state में तो नहीं कर सकते, so they need the molten state. ठीक है, अभी मेटल्स का ऑकरेंस क्या होता है, कहां पे मिलते हैं, कहां से मिलेगा ये मेटल? मेटल दो स्टेट में रह सकती है, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट क्या होता है? जो फ्रीली घूम सकते हैं, जिसका कोई बॉन्डिंग, किसका अट्रैक्शन कम है। तो अट्रैक्शन कम है मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में द मेटल्स दोस आर इन द बॉटम लाइन, जिसका उतना डिमांड नहीं है, दे कैन फ्रीली मूव अराउंड। लेकिन बॉलीवुड स्टार्स जो है, जिसका डिमांड, पब्लिक डिमांड इतना ज्यादा है, दे कैन नॉट मूव आउट फ्रीली, दे कैन नॉट गो टू पानीपुरी स्टॉल एंड ईट पानीपुरी, दे नीड बॉडीगार्ड, दे नीड प्रोटेक्शन। कहीं पे भी जाओ फेस कुछ लगा के जाओ, या सनग्लास कुछ डिस्गाइज बन के जाओ, कार में ट्रैवल करो, सो दे आर नॉट फ्रीली मूविंग अराउंड द पब्लिक। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज कंबाइंड। सो मेटल में भी जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, दैट इज इन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, those highly reactive metals are always come in the combined form. NaCl बन के रहो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसा बन के रखना। ठीक है, सो फ्री स्टेट में रह सकती है जो लो में है बॉटम सीरीज में, और कंबाइंड जो है टॉप है इन द सीरीज। अभी हम करेंगे व्हाट इज द टर्म कॉल्ड मिनरल्स। क्या होता है? द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स दैट ऑकर फ्रीली इन नेचर ऑन द अर्थ्स क्रस्ट, उसको हम मिनरल बोलते हैं। सो इसमें भी, मिनरल में भी और क्या होता है, कुछ कुछ मिनरल्स के अंदर रहता है बहुत सारी मेटल्स, और हमको अगर पता चल गया मेटल डिटेक्टर से इसके अंदर बहुत सारी मेटल्स है, और ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, सोल्ड करने के बाद, वी आर गोइंग टू बी यू नो लाखपति बन जाएंगे, आई मीन इट्स प्रॉफिटेबल टू एक्सट्रैक्ट दोज मेटल्स, देन दोज मिनरल्स वी कॉल देम ओर। सो मिनरल आर्थ क्लास में बहुत सारी है, लेकिन मिनरल्स के अंदर मेटल्स होना चाहिए, एंड दैट मेटल्स एक्सट्रैक्शन शुड बी प्रॉफिटेबल, देन दोज मिनरल्स वी कॉल देम ओर। ठीक है, अभी मेटल मिल गया है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट दोज मेटल्स। तो क्या करना है? सो फर्स्ट थिंग, मेटल के अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज रहता है, दोज इंप्यूरिटीज आर कॉल्ड गैंग। एक्सट्रैक्शन से पहले वो गैंग को पूरा निकाल के तोड़ फोड़ के रखना पड़ेगा।
उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन करेंगे कैसे करेंगे, फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर को आप रोस्टिंग में ले लो। रोस्टिंग मतलब उसको हीट कर लो हाई टेम्परेचर में एक्सेस एयर के साथ। हाई टेम्परेचर एक्सेस एयर में सल्फाइड मेटल्स जो होते हैं, जिंक सल्फाइड ले लो, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड ले लो, दैट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड से फिर मुझको निकालना पड़ेगा कि वो ऑक्सीजन को भी हटाना है और हमको चाहिए ओरिजिनल जिंक, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेट ओर्स को। कार्बोनेट ओर्स कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, एल्यूमिनियम कार्बोनेट ले लो, उसमें आप एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करो। Roasting was excess air plus heating. Calcination is absence of air, excess heating. Then we will get the calcium oxide. अभी हमको कन्वर्स करना है, कन्वर्शन ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर टू मेटल्स कैसे करेंगे। जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, बॉटम लाइन में है, उसको आप रोस्टिंग करवा दो। जो मीडियम में है, बीच में है, उसको आप दोनों प्रोसेस से कर सकते हो। इवन यू कैन टेक कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज बन जाता है। कार्बन है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और जो दूसरा मेटल है उसको रिड्यूस करेंगे, मतलब हाइड्रोजन उसमें ऐड कर देंगे या तो ऑक्सीजन निकाल लेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट ले लो जो आपका मदद करेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौर पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है दैट विल रिप्लेस द नॉन रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। अभी हम जाएंगे दूसरा रिएक्शन जो है थर्माइट रिएक्शन। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप दो मेटल लिया, फेरस भी लिया, एल्यूमिनियम भी लिया। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको याद है कहां पे थे एल्यूमिनियम और फेरस, ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें हमने देखा है फेरस है इधर पे, ये है फेरस और ये है एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन फेरस। अगर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो दैट कैन रिप्लेस द फेरस। लेकिन अगर हमने फेरस के साथ कॉपर को ले लिया या सिल्वर को ले लिया, देन एज फेरस इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर और कॉपर, दे विल नॉट रिप्लेस बट फेरस कैन रिप्लेस। समझ में आ गया ना। सो हियर हमने इधर पे था थर्माइट में हमने फेरिक ऑक्साइड लिया, एल्यूमिनियम के साथ कर रहा है। सो एल्यूमिनियम इसको हटा देंगे, एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्गर देन फेरस, सो इसको फेरस को हटा दिया और खुद बन गया मोल्टेन स्टेट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो ये जो रिएक्शन है जिसमें हमको आयरन मिल रहा है जिसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। फॉर हाई रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को ऐसे कार्बन छोटा मोटा रिड्यूसिंग एजेंट से वो निकल नहीं, दैट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड लाइक दिस। उसके लिए करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उसके पहले आपको जानना है कि वी आर डूइंग रोस्टिंग, वी आर डूइंग कैल्सिनेशंस, वी आर डूइंग लॉट ऑफ हीटिंग एंड ऑल, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, बट स्टिल द मेटल्स आर नॉट प्योर। इसके लिए हमको फिर इसको रिफाइनिंग करना पड़ता है, ठीक है। ये जो कॉपर, जिंक, सिल्वर, टीन, एसन इज द स्टैनस, जैसे कि टीन, निकेल, सिल्वर, ये जो होता है ना, दे आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। कैसे, आप एक ले लो, इसमें आप एनोड ले लो, इसमें आप कैथोड ले लो। ये जो एनोड है इसमें आप इम्प्योर मेटल को डालो और जो कैथोड है उसमें आप प्योर मेटल को डालो। ये होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा आपका मेटल का सॉल्ट, ये मेटल सॉल्ट बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका सेटअप हो गया। सो दिस इज व्हाट, एनोड में आप ले लो इम्प्योर और कैथोड में आप ले लो प्योर, ठीक है। अभी होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी चालू करने के बाद, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी चालू हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चालू होने के बाद वी विल सी जो इम्प्योर मेटल्स है दैट विल डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और जो प्योर मेटल है दैट विल बी डिपोजिटेड ऑन कैथोड के ऊपर, उसका स्टोर 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 मोर और मोर प्योर मेटल हमको आ जाएगा और वो कैथोड को निकाल के फिर मेटल को, प्योर मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर लो और ये जो नीचे चले गया इम्प्यूरिटी सेटल एट द बॉटम, उसको हम बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। क्लियर। अभी एक शॉर्ट माइंड मैप है आपके लिए। द ओर्स कैन बी हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। जो हाई रिएक्टिव है उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में जाना है और उसमें जो मोल्टेन ओर आएगा ना प्योर कैथोड में, उससे आप प्योर मेटल मिल जाएगा। जो मीडियम कैटेगरी में पड़ता है, जो बीच में है रिएक्टिविटी सीरीज का, उसको आप अगर सल्फाइड ओर है
तो आप रोस्टिंग पे जाओ। अगर वो कार्बोनेट और है तो आप कैल्सिलेशन पे जाओ। सो कैल्सिलेशन और रोस्टिंग करके आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलने वाले हैं। उस ऑक्साइड ऑफ मेटल को आप फिर से प्यूरिफिकेशन में प्रोसेस में डाल दो, यू विल गेट योर प्योर मेटल। और जो लेस रिएक्टिव मेटल है ना, फाइनली हमको वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन सबके लिए करना पड़ रहा है, रिफाइनिंग जो होता है। समझ में आया? तो हाईली रिएक्टिव को डायरेक्टली हम वही करके ले रहे हैं और बाकी लोगों को दूसरा कुछ मेथड करके अल्टीमेटली रिफाइनिंग में डाल रहे हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जो एकदम बॉटम है सीरीज में, फॉर दैट सल्फाइड और ज्यादा रहता है, जिसके सिल्वर सल्फाइड, ओके, और कॉपर सल्फाइड। जो बॉटम में क्या है, चाप है, राइट? चाप मतलब कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। तो इसमें आपको रोस्टिंग करना पड़ेगा और उसके बाद आप दे दो मेटल रिफाइनिंग में। ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, दैट इज कोरोशन। मोस्ट ऑफ यू नो कि क्या होता है, आयरन में रस्टिंग होता है। लेकिन ये रस्टिंग दिन पे दिन नहीं हो जाता है। आज मैंने एक लोहा का गेट लगाया और कल मैं जाके देखा स्कूल का गेट पूरा रस्ट हो गया है, कभी नहीं होता है। दिन के दिन जैसे कि महीने लग जाती है, बरसों लग जाती है। आफ्टर मेनी इयर्स वी सी द रस्ट ऑन द गेट्स, रस्ट ऑन द बेंचेस, है ना? सो उसको क्या करते हैं वो, ये एयर में या पानी में जो बरसात होते हैं, सो रेन वाटर एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करके वो Fe2O3 XH2O जो रस्ट का फॉर्मूला होता है उसका डिपॉजिट हो जाते हैं। सिल्वर का चमची, सिल्वर का बैंगल्स, सिल्वर का सोने का, सॉरी, सिल्वर का चमची से खाना बोल, जिसमें हम बेबी को पायसम देते हैं, कि बैंगल्स बनते हैं, कि कुछ दिन के बाद देखते हैं कि ब्लैक ब्लैक हो गया है। मैंने कुछ किया नहीं, ब्लैक कैसे हो गया है, मैंने पढ़ाई नहीं, उठा के रख दिया था। तो होता क्या है, दे रिएक्ट विद एयर, एयर के साथ रिएक्ट होके सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कोटिंग आ जाता है। इसके लिए जो भी सिल्वर का मटेरियल है, थोड़ी देर बाद वो ब्लैक होना ही है। दैट विल नॉट बी विद द गोल्ड। इसीलिए गोल्ड का प्राइस ज्यादा है, दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। सो ये देखो, सिल्वर रिएक्ट्स विद द एयर टू फॉर्म द सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कोटिंग आएगा। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्टर के ग्रीन कॉपर कार्बोनेट का एक कोटिंग देंगे। आयरन रास्ट फॉर्म कर जाता है विद एयर एंड वाटर। ठीक है। ये दिन के दिन नहीं होता है, अगर होता है प्रॉब्लम तो उसका एक सॉल्यूशन भी है, दैट इज द प्रिवेंशन। क्या करो, आप आयरन के ऊपर एक गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक का प्रलेप लगा दो। सो थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील आयरन दैट विल प्रिवेंट देम फॉर रस्टिंग। इसका एक अच्छा खासा नाम है जिसका नाम है गैल्वानाइजेशन। सो गैल्वानाइजेशन इज द थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील और आयरन। नेक्स्ट है अमालगम, ये भी एक एलॉय है। एलॉय मतलब द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स टुगेदर टू गिव इट अ हार्ड फिजिकल स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस पावर। ओके। तो ये अमालगम जो होता है वो हम एक एक आइटम, एक मेटल उसमें मरकरी होना है। मरकरी का जो अलॉय बनते हैं उसको हम बोलते हैं अमलगम। इसका भी बहुत यूज होता है। फिर स्टेनलेस स्टील, जो हम स्टेनलेस स्टील का बर्तन मम्मी लोग को बहुत पसंद है। सो स्टेनलेस स्टील चाहिए मुझे, आयरन भी चाहिए और निकल और क्रोमियम भी चाहिए, जो जल्दी रस्ट नहीं गिरता। जितना भी हीट दे दो उसके लिए ब्लैक ब्लैक नहीं आता है। सो दैट इज स्टेनलेस स्टील। सो फेरस निकल क्रोमियम, कॉस्टली मटेरियल, तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। आयरन का पैन ले लो या स्टेनलेस स्टील का पैन ले लो, उसका डिफरेंस सबको आ जाएगा। ब्रस होता है कॉपर और जिंक, ये दोनों मिला के जो बनते हैं अलॉय, उसको हम बोलते हैं ब्रश। सोल्डर, सोल्डर होता है लेड एंड, ये सोल्डर नहीं ये शोल्डर है। सोल्डर जो होता है अलॉय वो है लेड और टीन का। कॉपर टीन का भी अलॉय बनता है। सो दीज आर फ्यू अलॉयज दैट वी टॉक अबाउट। सो आई होप आपको चैप्टर क्लियर है, सॉरी, आपको चैप्टर क्लियर है। सो थैंक यू, मैंने बता दिया। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में अगर जाओ तो दिस इज द एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज में जाओ तो पेज नंबर 56। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, which of the following pairs will give a displacement reaction? We know displacement reaction में highly reactive metal or non-metal will displace the less reactive metal or non-metal. तो इसमें ऑप्शन ए में है NaCl solution and copper. So reactivity series याद है आपको प्लीज। और सोडियम ऊपर है, क्लोरीन बहुत नीचे है। सो सोडियम क्लोराइड के साथ कॉपर, सोडियम एंड कॉपर बहुत डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छा से यू कैन सी। नंबर बी, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम लगभग एक ही साथ है, सो यू कैन नॉट सी मच। फेरस सल्फेट के साथ सिल्वर, फेरस ऊपर है सिल्वर बहुत नीचे है, यू कैन सी। डी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉपर, सिल्वर और कॉपर नजदीक में है, सो यू विल नॉट सी। ए सी करेक्ट आंसर।
Question number 2. Which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? Option A, grease लगा लो, paint लगा लो, जिंक का कोटिंग डाल लो, all the above. सभी ठीक है, लेकिन आयरन में सबसे ज्यादा जो प्रिवेंट आयरन पैन टू रस्टिंग से वो है गैल्वनाइजेशन. अभी अभी हमने जो पढ़ा जिंक का प्रॉब्लम, उसमें पेंट लगा लो या ग्रीस लगा लो, हीट के साथ वो चले जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3. An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be option A calcium, carbon, silicon, iron. तो इसमें हम देख रहे हैं सीरीज में सबसे ऊपर क्या है, कैल्शियम है इनमें. सो दिस मस्ट बी कैल्शियम जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद that is soluble in the water and that gives the select line, we call it calcium hydroxide. Number 4. Food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is costlier than tin, zinc has high melting point than tin, zinc is more reactive than tin, zinc is less reactive than tin. Correct option is C, that is zinc is more reactive than tin. 5. You are given a hammer, a battery, a bulb, wires and switch. How could you use them to distinguish the samples of metal and non-metal? Easy है. पहले आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना लो. You need a battery, metallic wire, switch. You need a bulb. You need a connection. हो गया. Switch on कर लो. अगर लाइट जल गया तो क्लोज सर्किट बनने की बात. If the light is on, you know this is a metal. If light नहीं जला तो this is non-metal. हैमर दिया आपको malleable या ductile टेस्ट करने के लिए. If you can make it a thin sheets or a wire, then it is a metal. If not, it's non-metal. Assess the usefulness of these tests in distinguishing between metal non-metal. हमको पता है टच करके हार्ड है कि सॉफ्ट है, एक्सेप्शन रहेगा, but for testing we will get the general one. What are the amphoteric oxide? That is question number 6. Amphoteric oxides are those which shows both acidic and basic properties. Two examples are aluminium and zinc. Aluminium oxide reacts with HCl to form aluminium chloride water, then it is basic in nature. But aluminium oxide reacts with NaOH to give sodium aluminate and water, where it reacts as a base, where it reacts as an acid because it is reacting with the base to give salt water. Number 7. Name two metals which will displace the hydrogen from dilute acids and two metals which will not. तो हमको पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, दैट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन इजीली. लाइक आप एल्यूमिनियम ले लो, जिंक ले लो, ठीक है. और बॉटम में जो है हाइड्रोजन के नीचे जो है दैट कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन. सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, दे विल नॉट. Question number 8. In the electrolytic refining of a metal aim, what would you take as the anode, cathode and electrolyte? हमने electrolytic reduction में देखा है. In the anode there should be the impure metal, in cathode will be the pure metal, and as an electrolyte there will be the salt solution. So आज के लिए till 8 we have discussed. The rest we will discuss later on. If I see you that you are really interested and you are enjoying my class, I hope it was a short, in a nutshell, we covered the whole metals and non-metals chapter. If you like the video, please hit the like button, share with your near and dear ones so that it reaches to every corner in the world. And if you still like it and be in touch with me and regularly to be my visitor, my student, then please subscribe it. Your one subscription can change all of our life. Thank you so much. Take good care. Bye-bye. Subscribe and hit the bell icon to get all the notification. Stay happy and